Yeah, hello. Good afternoon, everyone. Welcome to this very interesting webinar organized by the Special Interest Group and the learning team of YI, Young Indians. Before we go to the session, we would like to just give you, for those who are not aware, a small introduction about Young Indians. Young Indians is a movement for Indian youth to converge, lead, co-create, and influence India's future. As an integral part of CII, Confederation of Indian Industries, Young Indian plays a pivotal role in India's developmental progress. Formed in 2002, YI has created a platform for young Indians to work towards realizing a dream of a developed nation. It has growing inclusive membership across all geographies and demographics with over 3,600 members spread across 55 chapters and 29,500 students across India. The membership includes young progressive Indians between the age of 21 to 45 years and compromises of entrepreneurs, professionals, and achievers from different walks of life. Through thousands of impactful projects and activities divided primarily in the areas of youth leadership, nation building, and thought leadership. We have a small video. Sandeep, if you can play the introduction of YI, and then we can go on to the speaker intro. If there is a sport that you love, play it. Believe in it till it takes you above. If there is a dream that you dream, you can realize it better with a team. For we, young Indians, Sandeep, the audio is a little bit issue. The audio is not audible? Earlier it was, now it's not. Yeah, you can try again. Just a second. Okay. I'm playing it again. Okay, thank you. If there is a sport that you love, play it. Believe in it till it takes you above. If there is a dream that you dream, you can realize it better with a team. For we, young Indians, are the voice of the nation and dream of realizing its true representation, our India, to be built on three pillars we worship: youth leadership, nation building, and thought leadership. Every young leader has an inspiring story, full of struggles and incomparable glory. We lead and inspire every day. We make leaders of tomorrow and today. 3,600 young leaders we brought together, tying 55 city chapters in a single tether, with one progressive goal and one voice for all young Indians to lead by choice. Entrepreneurs, professionals, and achievers, an ever-growing tribe of young believers, with empathy, compassion, and responsibility, each one excelling as per their own ability. Touching lives, both urban and rural, stronger communities, a cultural mural. Building a better India is our mission. We are passionate young Indians, leading with one vision. Young Indian members lead in many ways. Year on year we shine like positive rays. Contribute to our ecosystem and nation as one. Join Young Indians, a movement second to none. Inspire youth leadership. Lead towards nation building. Be the voice to spark thought leadership. We can, we will. Lead with Young Indians. Apply for membership in your city chapter. Visit youngindians.net and lead the change. Thank you, Sandeep. Now, without delay, I would like to introduce you to our speaker for this evening. Let me add him to the spotlight first. Hi, Ashwin. Welcome to. Hi. Friends, just a small introduction of Mr. Ashwin. Ashwin Porwal is a momentum trend trader, risk bearer, traveler, dreamer, and a spiritual person. And also, most importantly, he's a member of YI Indore chapter.
He trades in equities, derivatives, and commodities with his team of professionals. An MBA Finance from Institute of Management Studies, Indore. He has had many courses on stock market and life management at national and international levels. He started his career at a very early age of 20 years. He holds a very rich experience in trading. He's having keen interest in researching and exploring markets, which has turned him into a trained technical trader. A great consultant, and his energetic attitude always makes him available for suggestions and guidance. Friends, the format would be, Ashwin has a small PPT to share with us. So we'll go through the PPT and then we'll take the Q&A post PPT. If you have any questions, you can post it in the Q&A panel. And yeah, Ashwin is also a dear friend of ours, very, very respectable old member of YI. So I'm sure it's going to be amazing learning from him today. So over to you, Ashwin. Thank you, Pranav. Thank you, Siddharth, for giving me this opportunity to interact with you all. And friends, I am not here to teach you something, but I am here to share you my life experience with trading. It's been 20 years I am doing trading, full-time professional trading. And let's start. And I always try to be a super performer. Super trend trader, and for that anyone can achieve that super performance by just have a strong willpower, a process, and persistence, and strong commitment to achieve that success. First, I will share my screen. 1 second, please. Yeah. So Tony Robbins says there is always room in your life for thinking bigger, pushing limits, and imagine the impossible. That's what I am trying to do in my life and as well as in markets. So friends, trading is all about your life only. Whatever the principle you apply in your life, that's applied to trading also. And for me, trading is a combination of 3 things. First of all, it's a system that's role is 10%. Second is trade management, or you can say risk management, that their role is 10%, and the remaining role is about 80%. That is your psychology, how you handle your psychology in trading. Now, most of the time you listen to people in stock market, आप seminars देखोगे, आप webinars देखोगे, they are more on system. लोग आपको system सिखाएंगे, आप ये इस तरह से buy कर सकते हैं, इस तरह से sell कर सकते हैं. You can and majority of the times you will see that people focus and people also I realize in last 10-15 years that people also want to learn new systems, but system का जो role है वो सिर्फ 10% है. Then the second important thing comes is trade management, money management. यहाँ people lack lot of things which I will try to share with you. And the third is psychology. So start with system. First of all, system or method is very simple. A well defined entry and exit rule. बहुत simple language में हम बोलें कि entry और exit rule का एक simple definition आपके पास है कि मैं ऐसे entry करूँगा और ऐसे exit करूँगा before taking a trade. That is your system. And it can be a set of technical indicators जिनके combination से आप ये entry exit rule define कर सकते हो. And the third most important point where people lack is of time frame. कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच टाइम यू आर रेडी टू डिवोट टू द मार्केट. अगर आपके पास इफ यू आर फुल टाइम ट्रेडर and you can devote a whole day to trading, then you can go to intraday time frames. But if you are not a full time trader, you are more of कि मैं हफ्ते में एक दिन देख सकता हूँ आप मार्केट को, या मैं डेली दिन में 1 घंटा दे सकता हूँ मार्केट को, then you should shift to the higher time frame in technical analysis. Now my point here is let say you have a full day. आप कोई बंदा नया enthusiastic person is coming and he is saying कि मैं full time दे सकता हूँ. Then मैं बड़ा simply I ask him a question, do you like roller coaster ride? Then he says नहीं भाई roller coaster में तो बहुत डर लगता है. So I simply say tell him that boss you don't do intraday trading. Because intraday trading is a roller coaster ride. Every second आपका जो है BP ऊपर नीचे होगा. Every second you will feel stress, you will feel excitement, anxiety, everything.
and that's if you are not comfortable in your normal roller coaster ride, intraday trading is psychologically very difficult to. अगर मैं आपको सारा कुछ भी सिखा दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये आपके पॉइंट्स है, आपको ये ध्यान रखना है, स्टिल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल साइकोलॉजिकली, then it is very difficult to take intraday full-time trading. So here also you need to understand which type of trader you are before selecting your system or method. You need to understand this. Now the next important point come in trading is risk management. Now regardless of methodology, any approach you are trading in trading, there is only one way to protect your portfolio or your capital from large losses, is to sell when you have a small loss before it turns to a mother of all losses. In last 20 years of trading, मैंने इससे बेहतर कोई तरीका नहीं देखा है. If you have taken any trade with by any method, आपने किसी के कहने पे लिया है, आपने किसी जगह, if it is going in loss, you just cut it. Cutting loss is the most important method of saving yourself in this business, trading business. Legendary trader Etsy Kota says the most important three things. मेरे लिए जैसे he says is stop loss and stop loss. He says like हम हमारे गुजराती में कहते हैं भाव भगवान छे, मैं बोलता हूँ stop loss भगवान छे. If you want to be a trader, if you want to go in the trading, you should know the importance of stop loss. You should understand that it is very important to cut your losses as the trade goes against you. Now again the important thing, why it is important, because मजेदार चीज ये है, what happens like अभी पिछले एक साल से जो bull market चल रहा है, everyone is enjoying this bull market, everyone is, so making money in market is not so difficult. I'm saying this, making money in market is not, it is very difficult to retain that money. Because क्या होगा जब बुल मार्केट चलता है, स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, अगेन इट गोज अप एंड इट कीप गोइंग अप, तो आपको लगता है कि स्टॉप लॉस लेना क्यों है, फाइनली तो भाव आ ही जाता है. बट व्हेनेवर द मार्केट मेक्स अ मेजर टॉप इन इंडिविजुअल लीडिंग स्टॉक्स, उस बुल मार्केट के जो लीडर होते हैं, विथ माय एक्सपीरियंस आई रियलाइज दैट इस बुल मार्केट देयर इज अ 50% चांस दैट वो लीडर्स 80% तक डिक्लाइन करते हैं, एंड देयर इज अ 80% चांस कि वो लीडर्स 50% तक डिक्लाइन करते हैं. So if you will not keep the stop loss, if you will not cut your loss, even in profit, if you will not book your profits, then it is very difficult to survive in this business. The next, I'm going little fast because I cannot teach you everything in 1 hour, but I'm just touching the important points of trading. Now the trade management. It is again a very big topic, but never risk more than expected gain. I try to explain, and 1% capital rule. आप कोई भी ट्रेड मैनेजमेंट का एक सिंपल फिलॉसफी जो मैंने जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स को रीड किया है, they never take risk of more than 1% of their capital in a single trade. I am not saying कि 1% का स्टॉप लॉस लेना है ट्रेड के अंदर. आई एम सेइंग कि आपका जो भी कैपिटल है, आप सिंगल ट्रेड के अंदर 1% से ज्यादा रिस्क में लो. अगर आप ये सिंपल फॉर्मूला भी ट्रेडिंग के अप्लाई करते हो, you will never be out of the market. You will never be out of the market if you have a proper system. So not losing big is a single most important factor of winning big. I'm again saying कि पैसा अपने आप बनेगा, जो मनी है वो बाय प्रोडक्ट है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है. एंड लूजिंग इज नॉट अ चॉइस. लूज तो हो गई, स्टॉप लॉस तो आएंगे ही आएंगे, सबके आते हैं. एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर हैज आल्सो, दे हैव अ लूजिंग स्ट्रीक आल्सो, बट it is important you decided how much you are ready to lose. That is in your hand. Only stop loss, जो सौदा है, जो ट्रेड है, उसका लॉस लेना आपके हाथ में है. उसमें प्रॉफिट कितना आएगा वो आपके हाथ में नहीं है. You just follow the process. The next point here is that is your betting average. Now what is betting average? Betting average is is like आप साल में अगर 100 ट्रेड्स लेते हैं तो कितने परसेंटेज ऑफ ट्रेड आपके सक्सेसफुल रहते हैं. सो व्हाट आई रियलाइज आफ्टर स्टडिंग लॉट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स दैट most of the big successful trader like Paul Tudor Jones, or you take any other name,
इनका अगर आप you go and check your betting average, इनका betting average 45% से 60%. So if they take 100 trades, only 45% trades, only 45 trades are in profit and 55 trades in loss. So now you realize कि अगर 45 और 50% trades इनके profit में रहते हैं, 55 trades loss में रहते हैं, then how they will make money? Now the another theory comes is with betting average you have one more aspect, that is risk is to reward ratio. Now if your risk is to reward ratio is 1:1, matlab if you are taking a risk of 10,000 rupees in a particular trade and your reward is again 10,000 rupees only, so your risk is to reward is 1:1, and if you're taking a risk is to reward of 1:1 and your betting average is 50%, you are never going to make money. It will be always zero sum game. But if your risk reward is 1:2, that if you're risking 10,000 rupees and your reward is 20,000 rupees, expected reward is 20,000 rupees, then it is always, this equation will create an edge, then that your average gain and average loss ka combination with your betting rate, that will create an edge. So what I realized that this all successful traders, इन्होंने क्या किया है, they know that, because you will see a lot of social media, a lot of people say I have a system or I have a जहाँ पे 80% accuracy है, 90% accuracy है, when I take trade I am 90% of time right, I am 70. I never saw in my life in last 20 years that any system can survive for a longer period of time. If you say 2 year, 5 year, 10 year, कोई system आपको 70, 80, 90% accuracy दे ही नहीं सकता है. Max is 60, 65%, not more than that. So I always take every system as a 50-50. If you आप coin उछालेंगे, you will get a 50-50. Most of the half of the time you will get head and half of the time you will get tail. But again, this is not in your control. The thing which is in your control is your risk is to reward ratio. You try to take the trades जहाँ पे आपका risk is to reward ratio 1:2 की जगह 1:3, 1:4, 1:5 हो. So if you are risking 10,000 rupees, or if you are taking a trade with a risk of 3% or 5%, try to see with your system that this if you are taking a risk of 3%, whether that trade will able to give you 15% return or not. So if you are risking 3% and if you are getting 15% in a particular trade, you are getting 1:5 risk reward. Now you do this mathematics that if 1:5 is your risk reward, and if you are half of the time also you are right, you will make hell lot of money. Hell lot, I am saying, you will make your fortune with trading. So the biggest thing is in trading is to create an edge in your system. यहाँ पे सिस्टम जो 10% का सिस्टम है, वहां पे ये काम करने की जरूरत है विथ योर मनी मैनेजमेंट, दैट आप अपने रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो को जितना आप इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हो वो करो, और बजाय कि आपकी बैटिंग एवरेज को इंप्रूव करने के. बैटिंग एवरेज अगर इंप्रूव अपने आप होता है इवन विद द 45% और 40%, बट अगर 40% से कम आपका सिस्टम आपको सक्सेस दे रहा है, देन देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज ऑफ साइकोलॉजी, कि आपका अगर 10 में से 2, 3, 4 ट्रेड्स ही राइट होते हैं और 6 गलत होते हैं, तो माइट बी चांसेस कि अगर वो 5 ट्रेड इन अ रो आपके रॉन्ग होते हैं और 6th 7 ट्रेड जो आपके राइट होने वाले हैं, वहां आपका साइकोलॉजी सपोर्ट करना बंद कर देता है, आप नया ट्रेड लेते ही नहीं हो, तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी. इसलिए आई ऑलवेज बिलीव ट्राई टू बी स्टिक विद 50-60% बैटिंग एवरेज सिस्टम्स एंड ट्राई टू improve योर risk is to reward ratio, and that will create a big super edge in your trading. So first we discussed about the system, कि आप एक system methodology define करो, एक time frame define करो कि आप किस तरह के trader हो. Second, आप एक risk reward का एक combination create करो. So never let a good side gain into a loss. So my priorities in order to trade is first to protect myself from large loss. Initial stop loss अगर आपने proper keep रखा है और उसको आप follow कर रहे हो, तो आप हमेशा बचे रहोगे. Then the second point comes protect my principal when the stock moves. Say example, आपने कोई trade लिया है 100 rupees पे, and that trade goes to with a risk of 5 rupees.
and the trade goes to 105 or 108 or 1010, 110. Now you are in a profit, but you don't want to cut right now. So what I try to do, I change my stop loss from 95, which is 5 rupees stop loss, 95 to by my buying price. Now first I am trying to keep my stop loss very tight and on a place. Then I am moving my stop loss to my buying price once I was in profit. And then the third situation came where I was in good or healthy profit. My stock is already about 25% from my buying price. It is at 125 rupees. Now I am in a decent gain. Now I want to protect my profit. Now here also my protecting profit, I use trailing stop losses. There are various systems where you can use trailing stop losses. This trailing stop loss will protect because that profit is once you book that profit, that become your principal again. That's not but until unless you will not book it, that is a notional profit. So this is my priority in once I am in the trade. This is my priority to protect my trades. That is my risk management system. Now one more important aspect came with risk management system is position sizing. कि आपने trade लिए, what people do, lot of people do कि if they have a capital of say 10 lakh rupees, तो वो 15, 20, 50 stocks buy करना start कर देते हैं. It's so diversified कि you cannot handle 50 stocks. So position sizing की guidelines में again risk management के अंदर that you should never take more than 8% stop loss in a trade, or average should be, and your average should be not more than 5-6%. Now shoot your optimum position 20-25% in the best names. Say आपने 10 ट्रेड लिए, 8 to 10 स्टॉक्स में आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया, और आपके उन 10 में से यू विल नेवर गेट सक्सेस इन ऑल 10 स्टॉक्स. तो आपके वो 10 में से 2-3 स्टॉक है जो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर रहे हैं. नो व्हाट यू शुड डू हियर कि आपको उन 2-3 स्टॉक्स के अंदर रिस्क रिवॉर्ड को वापस से बैलेंस करके अपनी पोजीशंस को ऐड करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग. बिकॉज अगर आप पोजीशंस को ऐड नहीं करोगे और आपके 3 स्टॉक परफॉर्म किए और 7 परफॉर्म नहीं किए, एट द एंड ऑफ ईयर यू रियलाइज कि यू विल नॉट गेट अ सुपर परफॉर्मिंग रिटर्न. सुपर परफॉर्मिंग रिटर्न तभी आएंगे जब आप अपनी विनिंग स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशंस को ऐड करते चले जाओगे. बट अगेन हियर never take more than 20-25% in any single stock, because वहां आपकी अगेन रिस्क बढ़ जाती है. अगर ओवरनाइट आपको कोई रिस्क आती है तो वो it will become very difficult. So I suggest that even in a winning or successful names, you divide your portfolio. Never shrink your portfolio in 2-3 names. Always keep 4-5 names, ताकि आपका 25-30% का जो है वो हर स्टॉक में आपने बनाया और 4 से 5 स्टॉक्स में आपके विनिंग स्टॉक्स में आपका हो. एंड अगेन प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर रिस्क मोर देन 8%. ये मैं आपको 8% बोल रहा हूँ इज फॉर पोजिशनल ट्रेड्स, नॉट फॉर इंट्राडे. इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड का इक्वेशन अलग होगा. इंट्राडे में 1-2% की रिस्क पे आपको ट्रेड करना पड़ता है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेड्स. एंड इफ यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट टाइप वीकलीज एंड मंथली, वहां आपका रिस्क शायद 8 to 10, 12 हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट. सो इट्स नॉट कि आपने जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है कि आप ट्रेडिंग में भी आपने अगर से वीकली आप पोजिशनल कुछ कर रहे हो तो उसके अंदर भी इवन आई विल नेवर सजेस्ट कि आप 8 to 10% ज्यादा की रिस्क लो. इवन दो इट फ्लक्चुएट्स, बट यू प्रिपेयर योर सिस्टम जहां आपको 8 to 10% ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़े. नाउ one more thing on positional sizing is pyramiding. So what people generally do in markets, that 100 रुपए पे स्टॉक लिया and stock become and they keep stop loss of 90 rupees, 10% का stop loss लिया 90 का, and the stock came to 95. So they become excited. What they do, they add more in that losing position जहां उन्होंने 100 में buy किया है and 95 is अभी price है, and they are adding more. एंड व्हेन इट कम्स टू 90, वहां पे वो किसी फ्रेंड ने या किसी ने कोई रिपोर्ट दिखा दिया और किसी फ्रेंड ने बोला या प्रमोटर से पता चल गया, कुछ भी XYZ, आपको और एक्साइटमेंट हो गया कि यार ये तो 90 मिल रहा है, इट इज और बेटर डील. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एवरेजिंग इन द लॉस. फॉर सक्सेस, नेवर इन ट्रेडिंग, नेवर एवरेज इन लॉस.
always try to add in profitable trades. Always try to add in. So there are 4 ways to enter and exit in through pyramiding. First, number 1, all in all out. मैं एक बार में ट्रेड लूंगा किसी भी स्टॉक में और एक बार में एग्जिट लूंगा. सो आई बॉट से 1000 quantity at 100 rupees and at 120 I exit at all. That's it. That is all in and all out. Second is all in scale out. What you are here you are trying to do, you bought 1000 shares at 100 rupees. Now what you are doing, at 110 you are selling 200 shares. आपने 20% अपना बुक किया वहां पे. At 115 you again selling 200 shares. At 125 you again selling 20% share. Now remaining 40% आपने trailing stop loss लगाया. This is scaling out. You are booking win profits once the stock is getting success. Now the third situation is scale in, scale out, where you are entering multiple trades and exit also in a multiple system in profit. Now the fourth system is scale in, all out. Here what you are doing, and actually what principally personally I follow is the fourth one, scale in, all out. What I try to do कि मैंने एक trade लिया है, I bought at 100 rupees. Now it reached to 105 and I वहां पे मेरा risk reward फिर मुझे match कर रहा है. I added some quantity at 1010 again मेरा risk reward अगर match कर रहा है, again I added some quantity. So I am adding consecutively as the stock. And if you read also Rakesh Jhunjhunwala ka, even, and that is an investment again, but see how wealth is created. Even Rakesh Jhunjhunwala ka, you go and read na, 30 rupees से Titan खरीदना start किया था and he bought it Titan till 300 rupees. And you know, rest is history. So Rakesh Jhunjhunwala के even in investment or trading, the same, कि आपका जो सक्सेसफुल ट्रेड का रेशो है वो आप आउट ऑफ 10 3 4 5 ही रहने वाला है. बट वो 3 4 5 में आपने अपनी पोजीशंस को अगर इंप्रूव नहीं किया, अपनी पोजीशंस को ऐड करके नहीं आपने किया, तो आपको सक्सेसफुल फिनोमिनल रिटर्न्स नहीं आएंगे, आपको हमेशा एवरेज रिटर्न्स ही आएंगे. बट अगेन इन चारों सिस्टम्स में से मैं ये, आई एम नॉट सेइंग कि फोर्थ वन इज गुड, आई एम सेइंग दैट इज गुड फॉर मी. अगेन दिस इज साइकोलॉजिकल पार्ट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि if and they are comfortable with that कि few people they are good at all in, scale out, कि एक बार लेते हैं and if they book 50% they psychologically they become very कि हाँ now मेरे पास 50% profit है, अब मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ. But it depends to person. So मुझे फोर्थ वाला सूट करता है, सेकंड वाला सूट नहीं करता, because once I sell half quantity and वो स्टॉक और रन करता है, then that is a problem. And by selling that half quantity in the second system, what I'm doing, then again I will find a new stock जहाँ मुझे नई risk लेना है. So while taking a new risk, what I try to do is taking the risk in the same stock which is giving me the money. So there are this four system, इस पे हम डिटेल में कभी और शायद बात कर सकते हैं, but pyramiding का this is very important in trading, because otherwise, or even in life, आप मल्टीपल चीजें ट्राई करते हो, बट जहां सक्सेस मिलती है उसको आप स्केल करने की कोशिश करते हो. सो आई टोल्ड यू दैट सेम थिंग दैट स्टार्टिंग, दैट लाइफ डिसिप्लिन्स एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स आर सेम, लाइफ साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी आर सेम. मेनी पीपल बोलते हैं लाइक कि आई एम डिसिप्लिन्ड इन ट्रेडिंग बट आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड इन द अदर पार्ट ऑफ लाइफ. आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल. लाइक legendary T. Harv Eker says, how you do anything in your life is how you do everything in your life. आप लाइफ में अगर जो कोई भी डिसिप्लिन एक जगह फॉलो करते हो, आप सब जगह फॉलो करते हो. इफ यू आर लेट एट सम प्लेस एवरी टाइम, you will be late at everywhere. So now pyramiding in this way. So ultimately friends, trading is more about psychology than anything else. So आपने एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर लिया, आपने एंट्री एग्जिट का सिस्टम कर लिया, आपने टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट अपना बना लिया, यू आर प्लेस्ड एवरीवेयर, यू मेक योर रूल्स, एवरीथिंग इज सेट. Not now come the most, and I'm saying everything is important, but I'm saying the most important point here is how you handle your psychology. Now lot of things, it is a very big topic, even in regards of trading it's a very big topic, discussing the psychology, but I'm just touching 2-3 things. That managing your greed and fear relationship,
कि आपका ट्रेड जब गलत जाता है तो आप कितने फियरफुल होते हो, या इवन आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है, आपका स्टॉक 100 का 150 हो चुका है, नाउ यू आर ग्रीडी ऑल्सो एंड फियरफुल ऑल्सो, फियर ऑफ लूजिंग दैट प्रॉफिट एंड ग्रीड ऑफ कि ये 200 हो जाएगा. So that emotion management is again a most important part, and having patience and discipline, patience every part of in your trading journey. You will आपका patience बार बार test होने वाला है. You will get a losing streak. Every trader get a losing streak where even in last 20 years I also faced a few months, even a year, where I am not getting a good success following the same system. And there also you need to find out your reasons कि आपकी ये क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही. वहां आपका पेशेंस टेस्ट होगा. इवन इन प्रॉफिट्स आपका पेशेंस टेस्ट होगा कि आपका स्टॉक रन कर रहा है, मैं स्कोर रन करने दूं, वेट करूं. डिसिप्लिन कि आपने जो रूल्स बनाए हैं वो आप खुद भी फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं. आपने बनाया कि मैं आई विल एंटर इन दिस वे, आई विल एग्जिट इन दिस वे, बट यू आर नॉट एबल टू doing or handle, because and again I'm saying friends that ये greed, fear, patience, ये all things it depends on your normal living life. अगर आप normal life के अंदर भी discipline नहीं है, आप patience आप में नहीं है, तो आप trading में भी वो emotions, क्योंकि emotion. So lot of time I tell my friends that in trading we are not trading stocks, we are trading ourselves. हम खुद को ही ट्रेड कर रहे होते हैं, हमारी खुद की साइकोलॉजी को ट्रेड कर रहे होते हैं. तो दैट देयर यू नीड टू हैंडल साइकोलॉजी. Again, building your mental muscle, this is very important, that and it happens with मैंने कई लोगों को जैसे देखा है कि they learn everything, but at the end of when it comes to pull the trigger, they become afraid कि मैं ट्रेड कैसे लूं. they are या 3 ट्रेड सलंग लॉस के आ जाते हैं, तो 4 ट्रेड लेने में दे बिकम वेरी फियरफुल कि ये ट्रेड मैं लूं नहीं लूं. इवन दे जंप ऑन द स्टॉक्स, क्या रही है स्टॉक तो मेरे मुझसे नहीं हो रहा है, एंड देन दे जंप टू अदर स्टॉक, और वो स्टॉक नहीं चलता है, फिर जो छोड़ा था वो चलने लग जाता है. तो यहाँ मेंटल मसल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन मेंटल मसल्स इन टर्म्स ऑफ कि जब आप स्टार्टिंग में 1000 से आप 10 लाख के पोर्टफोलियो से काम कर रहे थे, यू आर गेटिंग सक्सेस. अभी लास्ट 1 ईयर में जिसने किया होगा, एवरीबॉडी इज गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस. तो जब आप 10 लाख से जैसे ही अपने आप को 25 लाख पे शिफ्ट करते हो, अगेन द होल माइंड गेम इज लाइक जिम में आप रोज जाके 10 केजीज उठा रहे थे, सडनली यू आर गेटिंग 25 केजीज कि अब आप इसको उठाओ. तो आपकी मसल्स को रेडी करना पड़ता है. सेम एज मेंटल मसल्स को रेडी करना पड़ता है. व्हेन द साइज योर साइज इंक्रीजेस विथ इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल, हियर आल्सो यू नीड टू डेवलप योर मेंटल मसल्स. तो ट्रेडिंग, आपके जो भी ट्रेडिंग रिजल्ट्स है ना, उसमें आपके इमोशंस को जितना आप लेस करोगे, जितना इमोशंस को हटाओगे, उतना आपका ट्रेडिंग रिजल्ट्स बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे. तो दिस इज अगेन मोर अ पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल हैंडलिंग, that how you handle your whole this business, this trading business. So it's a full time professional business where you need डेली. जैसे हम आईटी में बोलते हैं कि डेली आपको अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है, ऐसे ही मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में भी आपको डेली आपको अपग्रेड रखना पड़ता है. यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड टू लर्न फ्रॉम पीपल, एंड दैट इज आल्सो प्रोसेस. नाउ this people missed a lot, and मैं बोलूंगा कि अगर आपको सक्सेस पानी है ट्रेडिंग के अंदर, तो this part is very important, that you maintain your journal. आपने ट्रेड लिया, आपने कितना बाय किया, कितनी क्वांटिटी में बाय किया, क्यों बाय किया था, क्यों एग्जिट किया, ये सारा आप खुद मेंटेन करो. एक पूरा एक्सेल में अपना बनाओ, उसमें अपने विनिंग एवरेज विन्स निकालो, एवरेज लॉस निकालो, विन लॉस रेशियो निकालो, बैटिंग एवरेज निकालो कि आपका बैटिंग एवरेज कितना रहा इन अ पर्टिकुलर सिस्टम. आपका लार्जेस्ट परसेंटेज विन क्या था, लार्जेस्ट लॉस क्या था, नंबर ऑफ डेज प्रॉफिट में आपने रखा, लॉस में आप कितने दिन बैठे, एंड एट द एंड ये सारा बनने का और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेंटेनिंग योर लॉस, बिकॉज दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मिस दैट. इट्स नॉट अबाउट कि आपको वो ट्रेड आया था, मेरे पैसे बन गए, आज बन गए, कल नहीं बने. You need to be accountable, and that accountability comes with your journal. You need to maintain your journal. और मैं I must remember last 15 years से daily I maintain my journal.
you can find out कि मैंने अगर आई एम रनिंग 5 systems, तो मेरे किस सिस्टम में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, किस पीरियड में कितना प्रॉफिट है, किस में कितना लॉस है, एंड दैट ऑल कम्स। और ये रोज का 1 आवर मुझे अपना TDS जॉब के रूप में जर्नल मेंटेन करने में देना पड़ता है। सो एट द लास्ट ये सब जब आप करोगे तो आपका अपना खुद का एक चार्ट बनता है, इक्विटी कर्व जिसको हम बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस का। दैट ऑल्सो शोज कि हाउ योर ट्रेडिंग इज गोइंग, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर इक्विटी कर्व नहीं बना रहा है, मतलब ही इज मिसिंग ही इज मिसिंग बिग टाइम। So that is also a very important point, is maintaining your journal. Now holy grail. So everyone want to be a holy grail. कोई बंदा मिल जाए जो टिप दे दे, या कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, या कोई ऐसा कुछ जादू का, मैजिक का कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मुझे सक्सेस मिल जाए ट्रेडिंग के अंदर। After doing trading from last 20 years, I can guarantee you there is no system, there is nothing like Holy Grail. There is only one Holy Grail which I find good for myself, is the last point what I said, is your journal. आपके जर्नल से आपको जितने इनपुट मिलेंगे उतने इनपुट आपको कोई दूसरा बंदा नहीं दे सकता जितने आपके जर्नल से मिलेंगे। तो एक ही होली ग्रेल जो मुझे समझ में आया है वो है, दैट इज मेंटेन योर ओवर जर्नल। सो डोंट, एंड मैक्सिमम ट्रेडर जो फेल होते हैं in the longer time in trading is that always looking for something new, something more better and more better, but it is nothing like more better। एक सिस्टम बनाइए, कोई सा भी सिंपल सा सिस्टम बनाइए जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बैटिंग एवरेज प्रॉपर हो, और उसको रन कीजिए, and you will get success। and again even in life and even in trading, एक और बहुत easy way है सक्सेस पाने का, लाइफ में भी और ट्रेडिंग में दोनों में, that you find a mentor or a role model that suits your personality. It is very important, again, that suits your personality. You find that if you want to be a F&O trader, find a person who has done lot of success, who got lot of success in F&O trading, not in cash trading or something. Or if you want to option seller, or if you want to become option buyer, or any time, you just try to find a person who already did this. आप उस बंदे को देखो, उसका पूरा जर्नी को रीड करो, उसके मॉडल्स को आप कॉपी करो। इफ यू कॉपी हिम 100%, आपका 70% सक्सेस तो ऐसे ही आ जाएगा। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ मेंटर एंड अ रोल मॉडल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट मेंटर इज अ पर्सन जो आपके ट्रेड्स जाके देख सकता है, आपको डे टू डे में गाइड कर सकता है आपकी ट्रेडिंग में। अगेन मेंटर वो होना चाहिए, व्हाट आई एडवाइज, जिसने खुद ने ट्रेडिंग की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर जो पेड वेबिनार्स होते हैं जहां वो पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं सिस्टम से। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटर जिसने रियल लाइफ में वो सब फील किया हो जो आप फील करने वाले हो ट्रेडिंग के अंदर। तो यू नीड अ मेंटर जो आपको टाइम पे एवरी टाइम गाइड करे। एंड रोल मॉडल ऐसा है जिसको आप दूर से देखे। अमिताभ बच्चन इज अ रोल मॉडल, ही इज नॉट टीचिंग यू हाउ टू डू मॉडलिंग और हाउ टू डू एक्टिंग। वो आपके लिए रोल मॉडल है कि यार ये बंदे ने इस तरह से मेहनत की, इतनी सारी मेहनत की, आई विल ऑल्सो डू दैट। So you can copy a role model also, and you can take guidance from your mentor. So I am lucky enough that I got lot of mentor in my life. There are many mentors in my life in different stages of life. Starting में I got a few good friends जिन्होंने मुझे mentoring की. After that I found new people, जिन्होंने मुझे technical सिखाया. So I at every stage, and today also I have a mentor. And I have also a lot of role models in different stage of life। आप एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर क्रिकेट प्ले कर रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का रोल मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर आप इंटरनेशनल पे अगर सिलेक्ट करो तो यू विल मेक रोल मॉडल who has that capabilities to handle that pressure। तो आप रोल मॉडल एंड मेंटर दोनों अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करो। एंड आई आल्सो फाइंड दोस टाइप ऑफ पीपल जहां मुझे उनको देख के लगता है यार ये मैं ही हूँ। आई एम द सेम पर्सन, द पर्सन जो ये बंदा कर रहा है, द सेम थिंग आई एम डूइंग दिस। So I just need to copy him because he is successful. I will also get that success definitely. So don't try to find that holy grail. Stick to your things and you will get success. In the last, I recommend lot of these are the good books which I find जिनको मैंने multiple of times read किया है। मार्केट विजार्ड सीरीज है जैक शेगवर का। यूएस के टॉप ट्रेडर्स के इंटरव्यूज हैं।
आई एम जस्ट सेइंग दैट ये इंटरव्यूज से आपको जो मिलने वाला है वो उनका साइकोलॉजी, कि ये ट्रेडर ने किस सिचुएशन में कॉटन ट्रेड किया तो इसने कैसा हैंडल किया, एंड दे डिस्कस देयर ट्रेड्स आल्सो इन दैट सीरीज। उस बुक के अंदर उन्होंने अपने ट्रेड्स बताए, अपनी सिचुएशंस बताई हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड एडवाइस देयर in Market Wizard series. So please, I request everyone to go and read that book. Now, Mark Minervini books are awesome books. Think and Trade Like a Champion, Trade Like a Stock Market Wizard, Momentum Master. Momentum Master is a book जहाँ आपके कॉमन एक ट्रेडर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके चार्ट अलग अलग डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडर्स ने आंसर किया हुआ है. तो दिस इज अगेन माय एडवाइस. मैंने इस बुक को ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स पढ़ा है, रीड किया है. एंड अगेन डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस का बुक. इट्स लाइक आप जब ये बुक पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा कि यार ये मेरे लिए ही बात कर रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट फॉर मी ओनली. सो अल्टीमेट. Then books of William O'Neill, Jesse Livermore, Nicholas Darvas. Nicholas Darvas was a part-time trader and a full-time dancer. And you can go and read his books, read his success story. If somebody is want to do trading as a part-time, go and read Nicholas Darvas books. There are many other books, but these books influenced me a lot. So more or less, I read these books again and again. I try to read new books also, but these are my like Gita Sare. Gita है अपने लिए. Every time you just open the book and you will read, you will realize that ये point I am missing. Every time I am getting a new points while reading these books. So this is all a small brief on trading, friends. Now I am open for the questions. Thank you. Thank you, Ashwin. I think it was a very insightful presentation. We have some questions here. Before I take into the questions, दो तीन चीज. I think आपने जो बोला that life and trading and markets is almost synonymous. A lot of times people don't relate that essentially what you're doing in the market is a reflection of your own yes, personality. So I think yes. that's a very deep important aspect जो लोगों को समझना चाहिए, that if they try to fit into someone's shoes, जैसे life में you cannot fit in, ऐसे ही हो सकता है. A couple of things before we take the priority of the Q&A. एक तो आपने बोला यार, okay, guys, when we ask the question and answers, we will see if you want, you can answer them with your video on also. So we'll just screen the question and we have some hand raised also. So we'll call up the name and you will be able to unmute yourself. But before that, if at all we discuss any stocks or anything like that, it is purely for educational and illustrative purposes. We are all part of markets, we are all part regulated, so do not think that this is any kind of investment recommendation. So I think यार Ashwin, आपने बोला कि psychology is one of the most important thing, as well as stop loss is one of the most important thing when you want to manage your risk. Now, how do you build that mental muscle? If you can guide us through that. Okay, typically Ashwin Porwal, what he does on a whole day, आपका दिन कैसे चाहता है, how much time you spend and everything, and also how do you reinforce your mental psychological bandwidth कि यार loss book करना है तो loss book करना है irrespective of the amount involved, not the percentage but amount. So if you can just touch on those 2 points, that one, if you can run us through that your whole day, how much time you spend preparing before or after the market, and secondly, how do you develop that mental psychological power to overcome the behavioral loss नहीं book करना है, something like that. Okay. So first your first question, what is my routine is more about. So in the morning I just give 15 minutes. तो जो morning में news का update होता है वो I just want to take कि जो stocks मेरे पास हैं उनमें कोई या overall market के अंदर is there any news or something. But I sit on the screen at 8:30 with my all setups ready and all. 3:30 when the market overs, it's a full-time trading, so I trade till 3:30. Once the market over, it takes me 1 hour to write down everything what I am talking about the journal. It takes almost 1 hour. 4:30 it will take. That I record my all the trades जो मैंने किए हैं, and then after that I take a break for 1 or 2 hour. Then we have some screener running जहाँ हम we have our own style of screening. We use some softwares, we use lot of things.
once we complete all this screening and I have a team, पहले ये मैं खुद करता था, now I have a team जो एक बार का first level of screening करके they send me the stocks. Then after that it will almost take 2 hours to me, first 1 hour to screen all those stocks जो मेरे पास list आई है, to prepare for next day कि आज क्या action हुआ, क्या मेरी screening list में stocks आए हैं, उनको next day कैसे मुझे play करना है, first and the second जो I am what position I am holding, तो उसमें मुझे कैसे react करना है, I am very clear कि अगर कल ये stock चलेगा, this is my stop loss and target generally I don't go in that because earlier I like to share that earlier I used to have a projection models. लोग Elliott करते हैं, लोग Fibonacci करते हैं, जहाँ they try to find out targets. But last 7-8 years, I am remove subjective analysis from my reading. So I am more a trend type of trader where जब तक trend चल रहा है, I am with the stock. जब trend खत्म हो, I am exit. So again in the run up also I have my own setups जहाँ मुझे reading आती है कि now this is जो एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया है नाउ दिस, तो आई हैव माय एंट्री एग्जिट रूल जो मैं एक दिन पहले से डिफाइन मोर और लेस कर लेता हूँ बिफोर, बिकॉज अगर मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं जाऊंगा, व्हाट आई फील प्रणव इज लाइक कि ट्रेडिंग में इट्स लाइक इफ आप जंगल में ऐसे ही शिकार करने निकल जाओगे ना तो आपका शिकार होने वाला है. ट्रेडिंग शुड बी सो सिंपल ना कि वो सामने कॉर्नर में पैसा पड़ा हुआ है, मुझे से उठा के लाना है. इट शुड बी सो सिंपल. आपका प्रोसेस भी इतना ही सिंपल होना चाहिए और ये मेंटली आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. इफ यू एवरी टाइम यू ट्राई टू टेक अ ट्रेड एंड यू आर जंपिंग हियर एंड देयर, यू विल नॉट गेट सक्सेस. जो चीता एक बुशेस के पीछे छिप के बैठा रहता है एंड ही विल ट्राई कि कब उसका शिकार एकदम थक हार के हो जाए एंड ही विल अटैक, जबकि ही इज अ फास्टेस्ट एनिमल. अगेन ही विल वेट फॉर द राइट टाइम. सो अगेन दैट कम्स विद अ 1 day प्रिपरेशन कि हम एक दिन पहले से वी प्रिपेयर एवरीथिंग कि कल मुझे इस पे कैसे रिप्लाई करना है, राइट. किसी भी पोजीशन को, सिचुएशन को. अगेन इसमें सिचुएशन कैसा होगा कि आई एम फुली पैक्ड, आई हैव ऑल द पोजीशन और सुबह SGX निफ्टी जो है वो 150 पॉइंट नीचे खुल रहा है. सो दिस इज ऑल्सो सिचुएशन विच यू नीड टू हैंडल इन द मॉर्निंग कि ये करना कैसे. सो दिस कम विद द एक्सपीरियंस ऑल्सो. अगेन आई एम सेइंग प्रणव कि इफ I teach everything, मतलब मैं किसी को साथ बिठा के ना 1 साल तक सब कुछ सिखा दूं ना, तब भी उसको एक चीज जो मिसिंग रहेगी वो उसका एक्सपीरियंस है. He or she will take 1, 2, 3, 4, 5 years. It's like a journey which you need to live by. आपको उसको जीना पड़ेगा. It's a professional, like एक सर्जन होता है जिसको पूरी वो कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जब जाके फाइनल वो एक सर्जरी करने के लिए, तो he takes 7-8 years. Same as for me, I think a professional trader को एक successful बनने के लिए he needs to play a experience of 4-5 years. वो 4-5 years का experience. So वो दिन हमारा, so after that 2 hours I need for that next day preparation. That was your first question. And second, you asked that how to handle losses and all. That should Pranav, that should be in your process कि ये करना है तो ये करना है. That's it. मतलब इसमें if and buts नहीं. And I would be little bit spiritual here. I'm saying maybe I don't know people will able to relate or not, but मैं जब seriously I'm saying this, मैं जब सुबह ट्रेडिंग के पहले आता हूँ तो I sit in my मंदिर में बैठ के 5 मिनट गॉड को बैठ के what I say कि देने वाला भी तू है, पाने वाला भी तू है. Well, I'm saying I'm detaching from my trades. What I'm trying to do here is I'm detaching. Once I will detach my trades now, then वो इमोशन का रोल कम हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग वी आर ह्यूमंस, इमोशंस तो आएंगे, ग्रीड, फियर, ये नेचुरल आना ही है, बट इसको हम कम कर सकते हैं, टेपर डाउन कर सकते हैं. हम अपने आप को रियलाइज करवा सकते हैं कि लास्ट टाइम वी डिड दिस मिस्टेक, नाउ दिस टाइम वी हैव टू बी वेरी स्टिक. तो ये इस तरह से तो ये ग्रेजुअली स्लोली आपकी इस तरह से मसल पावर डेवलप होती है. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई टोल्ड यू इज रीडिंग. 1 घंटा अगर आप ओनली फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को रीड करोगे ना, आपको इतने इंसाइट्स मिलेंगे और देन यू रियलाइज कि यार ये आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग, और वहां आपकी मेंटल मसल धीरे धीरे. तो इन फ्रॉम लास्ट 4, 5, 6, 7 years आई स्टॉप रीडिंग अबाउट सिस्टम. कोई नया सिस्टम मुझे सीखना ही नहीं है. Even I stop reading about risk management. I have my own risk management, but I am continuously reading new traders. I always, and that give me an additional edge in my psychology, building that mental muscle.
So and again, when you grow na, if you keep growing with the age also in life also, you need experience. And आप लोगों को देख के सीखते तो हो ही ना कि यार he that person did in this way, तो मुझे भी अगर मैं ऐसा करूंगा this is because again से कि आप किसी को कॉपी करो 70% आपका जॉब वहीं डन हो गया है. That's it. It is very simple. So again, I'm saying trading is very simple, but you need to work here, nothing else, nowhere else. Perfect, Ashwin bhai. I think we have 10 questions, 10 minutes. काफी question आ रहे हैं, but at least the point which I can get from your simple trading is that you spend 4 hours after market in trying to read, trying to log the journal, trying to run through the setups and everything. So it is a hard job. It does not mean trading is just 9:15 to 3:30 and you're done with it. Spending 4 hours is equally. Not all professional traders can do it, but this is the effort that goes in. Now, I'll quickly run through the questions. You answer pretty quickly so that we can give everyone an opportunity. First question, option or equity, which is better? Always, if you are starting, equity is better. Never option is not. Although abhi option trend mein hai, काफी option writing and but these are very dangerous products. I will not suggest. This is a very, very, very professional work. Although अभी Twitter पे और Facebook पे और WhatsApp पे whatever ये बहुत easily समझाया सिखाया जा रहा है, but it is not a wealth creation process. Option is not for wealth creation. Perfectly, would agree with you. What's your view on Heiken-Ashi candle theory for momentum trading? You can use any Heiken-Ashi you can use. It is good, but I'm just saying you take one trend indicator, that is moving average, एक trailing stop loss का indicator ले लो, एक momentum के लिए RSI या ADX को ले लो, and one time frame. That's it. खत्म. System is over. You don't need anything else. Keep it simple. Keep it simple. Yeah. How do you do position sizing? If I have 1 crore capital, 1% capital loss is 1 lakh. But if my position is for 5 lakhs, then 20% drawdown is very big for stop loss. But what is the question? I mean, even I didn't understand what the question was. Because I think what the gentleman or someone who wants to state is that if on 5 lakh position, 1 lakh is capital loss. Because total capital is 1 crore. It depends upon your risk and reward. If per trade you are taking a risk of 1 lakh rupees, तो आपका 5 lakh का size create ही नहीं होगा. It will be a bigger size position. If you are taking a risk of if you are taking a trade of 5 lakh rupees, जहाँ आपका trade का position का size 5 lakh rupees है, if you are risking only 3%, तो 15,000 का stop loss होगा. It never be 1 lakh rupees. Good. Very simple. Yeah, and we have a question from Kishore. When to average? I think you mentioned that scaling up, scaling down, multiple ways. No scaling down, only scaling up. Average तो करना ही नहीं है. You need always try to add in profits, not in losses. Yeah, I think that scaling all out is a good strategy to across. It works in fundamentals or technicals, you know. Yeah. Then how to select stock for option trading? He mentioned option trading is not good for at least the beginners that we have in the room. What is your opinion on option trading? वो भी answer हो चुका है. Also, how many points gap up do you suggest we keep in bank, Nifty and Nifty for above weekly expiry option trade? I think a lot of people are fascinated by options, but वो जाने देते हैं. How do you plan long-term investments in stocks? We're talking about trading, so there's no long-term investment involved. But when do you decide to exit? Maybe you can answer anything on exit part. One thing I can add. I'm not saying कि investment is altogether different topic, but you can do a positional trader. You can be a positional trader where you can use weekly charts. So don't look at daily charts or hourly charts. You can use weekly charts, and weekly charts में एक week का एक candle बनेगा. And you can use that, and in a week you just spend 2 hours for that. 2 घंटा आपको देना है, and you can not कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही आपको करना है. You can spend, and that positional trading. So अगर if you are doing with weekly, आपका एक successful trader can run to 6 months also. 6 महीना 1 साल भी एक success. Last year का अगर bull market देखोगे, there are lot of many stocks जहाँ weekly के अंदर भी पिछले 1 साल से exit नहीं आई है. Even the फास्टेस्ट एग्जिट भी आप फाइंड करने की कोशिश करो तो नहीं आएगी. तो विथ वीकली यू कैन डू पोजिशनल ट्रेडिंग. आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्टिंग. इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. वहां रिटर्न्स आपको इन्वेस्टमेंट जैसे ही आएंगे, बट यू कैन डू विथ वीकलीज. बट डोंट जंप द टाइम फ्रेम कि वीकली करते करते यू स्टार्टेड विद द डेली ओनली. Yeah, I think you pointed out, you very well mentioned that you need to have a set rules. जो भी हो rule, intraday हो, weekly हो, monthly, जो भी हो, but you need to have some rules to get started and then improvise. Yes. What software is good, algo or normal?
Any Algo is a different game altogether. जहाँ आपको कुछ करना नहीं, आपको पैसे देना है सामने वाले को, वो he will run the algo and or you will run the algo. So algo is a emotionless trading. You need to backtest your algos. वहाँ equity curve check करना पड़ेगा. Again वहाँ आपको अपना drawdown कितना आ रहा है वो जैसे I just wrap it quickly like कि अगर कोई मुझे बोलता है कि ये अल्गो है जो मुझे 30% ईयर में रिटर्न देगा बट इसका ड्रॉडाउन भी 30% है तो आई विल नॉट टेक इट. आई विल ट्राई टू टेक जहां अल्गोज में ड्रॉडाउन कम है बिकॉज आई मेंटली आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ. और ये अल्गो है जो मुझे 100% रिटर्न देगा बट इसका 50% ड्रॉडाउन है. सो आई विल नॉट टेक दैट अल्गो जिसका 50% ड्रॉडाउन है बिकॉज मेंटली मैं उस अल्गो को साल भर रन ही नहीं कर पाऊंगा. और आई विल टेक कि 30% रिटर्न हो बट ड्रॉडाउन कम हो. And always, if you want to be a professional traders, I think personally, you do personally, algos is okay. It's a future. I'm not saying it's a future. Algos are the future. Next 5 years, you will see a lot of people will do algos. Great. What's your view on Nifty? Any chances of major correction? We would hope that. If we knew, we no would views because I told you, I do not have any prediction models or something. I use I'm a more of trending and trend trader. So अगर अभी up trending है तो I've been sitting with a stop loss. Nothing. बेती गंगा में चलते जाओ. जिस direction में जाता है. Also, can you recommend repeat the list of the books? We'll share that on our YI group. जो भी books अश्विन भाई ने बोली है. There's some more questions which we want to take before we wrap up. Let me just see. How do you plan? वो तो हो गया. What is typical stop loss percentage for intraday trades? Any suggestion? For intraday, 1 to 3%, not more than that. 1 to 3%. 1 Okay. to 3%. Can we have a brief run on momentum trading train setup style of trading? And also, does he do the screening of the stocks to trade? On how does he do that? So someone wants to know what is momentum trading and how do you screen for stocks? Any quick momentum trading? Okay, So what we are trying to do that if any stock is in already a run in a bull run or a bear run, so what we are trying to take, we try to catch a trend or swing in between, upswing in between. So here in momentum trading, again I'm reading. I'm saying you can use ADX or RSI, these two, or stochastics, any one of this indicator which is good for momentum trading. And use moving averages or trend lines are very simple. You can do it. And for momentum, you can use 5, 10 or 21 ka moving average you can use, or you can use 50 ka moving average. That's it, sufficient for this. And one trailing stop loss, people use super trend for the same. So one trailing stop loss is sufficient. So again repeating, one stop loss, one indicator which define trend, one indicator which is for trailing stop loss, one indicator for momentum, and one fixed time frame for trade. That's it. Perfect. Also, what is the max quantity has a percentage of average daily volume of the stock that you suggest for any trade? ADV is max percentage that you can take up on a trade. I think 5% of total volume in a day, not more than that. Perfect. I think we have a hand raised by Galaxy A8. We can't see the name, 2018. Do you want to ask any questions? We have 1 or 2 minutes. Let me check. अगर मिलता है तो. Yes, I wanted to ask you about the books only. And you said that you will recommend the books later. Yes, we'll put it on our YI group. Or if you're not part of YI, we'll send it via email or something to all the. I'm grateful because I'm not as yet a member. I would like to be, but in the meantime, I'll be grateful if the books could be sent to me so that I could start reading the books. Thank you. Perfect. We'll put it up on the. Ashwin bhai, is it okay if we can put up your slides on the chat? Yeah, definitely. Perfect. So we'll share it up on this chat. Okay. Are there any option on Bitcoin? Do you want to take that? Someone asking any opinion on Bitcoin. Yeah. Any opinion on Bitcoin? No, I'm not doing trading on Bitcoins. I am more of a equity trader. Okay, so I think we are there. I had some questions there, but I think we're almost running time. But okay, just out of curiosity, so you mentioned, okay guys, first of all,
surviving 20 years trading and remaining sane is also a huge achievement on its own. And journaling every day, for the last 15 years is also, I think, a commendable feat that a lot of people cannot achieve. So do you use any, and how do you journal them? Do you use software or write them? Excel. Use Excel them. So that's a fairly tedious task. Great. So let me see if we have Siddharth Bhai here to do the closing. Siddharth Bhai, are you here? Let me just check, Pranav. He might be in the attendees one. Just Yeah. Siddharth Rajgaria, is that one? Okay, No. Cool one. I'm promoting him to panelist. Perfect. Yeah. Okay, over to Siddharth Bhai to do the vote of thanks. Just connecting probably. Yeah, he's now a panelist. Hi, good afternoon, everybody. Thank you, Ashwin Bhai, for a very wonderful session. And Thank I you, hope Siddharth. everybody must have learned a lot of insights from him. Though he is my neighbor, and I could have never learned so much from him being a neighbor, but this is a good platform that he has taught a lot of good things over here. So, Ashwin Bhai, thank you very much once again for giving a wonderful session. Thank you, everyone. Thank you, II. Thank you. Okay, thank you, Ashwin Bhai. We'll just post the book list on the chat and the presentation, and the rest can leave. Okay, great. Thank you, Ashwin Bhai. Take care. Thank you. Bye-bye.